Okay, so when you define a generic class, you have to define class name, then in angular bracket pass the t for type parameter. Okay, means which is used to accept any type of value. Okay, so here it is a declaration of generic class name, then type parameter is t. Okay, t refers to the type parameter. The declaration of generic class, the name of the class followed by a type parameter section. The type parameter section is represented by the angular bracket that can have one or more type of parameter, and it is separated by a comma. The class name, then type parameter here we define. Understood this one? How to define a generic class, Ankita? Yes, sir. Yes, sir. In case you want to create a generic class to set and get the integer and string value, you can use the following code. So how to use the or how to place the string or integer value. The public class generic class demo for type parameter, private t object, public void set value. देखो यहाँ पर ये क्या है, it is a declaration of integer, it is a declaration of variable. When you define a variable, first you define what? First you define the data type. So let's say capital T is your data type, small t is your variable name. तो यहाँ पर टाइप पैरामीटर हमने यूज किया, मीन्स इट विल एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू एट रन टाइम. इट विल store the string value, it will store the integer value, any type of value it will store. Then public void set value t object, this dot t equals to t, public t get value which is return a value. Set value is used for store the value, and here another function that we are using, public t get value, it is return the value. Now generic, so here first we are defining two functions. One is public void set value, public void function name, then parameter में क्या है, अगर आपको parameter store करना था integer का int a और string b, तो यहाँ पर हम तो global variable define किए हैं ना. तो t is the data type, t is a variable. देखो यहाँ पर आपका मेंबर वेरिएबल का नाम t है, पैरामीटर वेरिएबल का नाम भी t है. तो आपको मेंबर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज किया गया, दिस डॉट t इज इक्वल टू t. समझ में आया, दिस डॉट t इक्वल टू t. यहाँ पर डाटा टाइप के लिए हम कैपिटल T यूज किए, मीन्स वेयर वी कैन टेक एनी टाइप ऑफ वैल्यू. ओके, देन पब्लिक small t is of capital T type. Small t is of capital T type. Small t is a data variable name. Variable name for small t is capital T type. That means the data type of small t is capital T. Capital T, yes. Okay, which is called as the global variable, means global data type, which is taken any kind of value. Okay. Then generic class demo integer. So here I define generic class demo. Generic class demo is what? Class name. Then at runtime we mention that we have to pass the integer value. यहाँ पर हमने कोई डाटा टाइप पास नहीं किया, लेकिन जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन पास किया जो ऑब्जेक्ट है,
वो ऑब्जेक्ट की मदद से मैं सेट वैल्यू मतलब वो फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और क्या वैल्यू स्टोर करूंगा ना 10 ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू आई एम पासिंग ए वैल्यू 10 तो 10 जब मैं पास कर रहा हूं 10 कहां पर स्टोर होगा सेट वैल्यू में यहां पर स्टोर हुआ फिर जब मैं यूज करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू तो मुझे रिटर्न करेगा क्या 10 रिटर्न करेगा तो व्हेन आई यूज सेट वैल्यू then I pass the 10 when I use the get value it is return the value and it is showing you 10 then next phase में क्या है देखो generic class demo string object new generic demo object dot set value यहां पर मैंने एक string value पास किया that is a 10 मैंने एक string value पास किया 10 now this 10 has store where यहां पर स्टोर होगा सेट वैल्यू में स्टोर होगा फिर जब मैं यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू करूंगा तो मुझे दिखेगा 10 देखो एक ही फंक्शन है और वेरिएबल भी मैंने कोई दो वेरिएबल और डाटा टाइप मैंने डिफाइन नहीं किया एक ही वेरिएबल डिफाइन किया डाटा टाइप भी नहीं है लेकिन हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक टाइम पर वो इंटीजर ले रहा है एक टाइम पर वो स्ट्रिंग ले रहा है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज द व्हाट जेनरिक टाइप ओके मतलब ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू इंटीजर मैंने पास किया तो एट रन टाइम मैंने पास किया इंटीजर फिर यहां पर जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो यहां पर मैंने स्ट्रिंग पास किया जो स्ट्रिंग वैल्यू वहां पर स्टोर होगा ओके सर इंटीजर वैल्यू को कि स्ट्रिंग वैल्यू को सेटा स्मॉल टी में स्टोर होती है हाँ in one variable it is stored and its data type is capital T so it is not having data type we have it is taking as a global type parameter we make it as a global okay इसको global बोला जाता है then creating a generic method in a generic class a method can use the type parameter of the class which automatically make the method generic in a generic class remember that in a generic class a method can use the type parameter of the class which is automatically makes the method generic okay now see there private t object public void set value सर it is set value method का generic method set value method का it is generic method हाँ set value are not generic method it's a void na हाँ so get value is a generic method get value का public t get value right so that is a generic method clear so private t object public void set value then type parameter t this dot t equals to t then public void t get value return type is what t okay t means it is a type parameter so here get value is generic here get value is generic okay the declaration of generic method contains the type parameter that is represented by the angular bracket public type parameter then return value method name then argument list public type parameter return value method name then argument list you can create a generic method in the following snippet public type parameter t show value then t then value public type parameter t show value then t value okay so here it is the way of defining a generalized method एक्सेस स्पेसिफायर हो गया यहां पर टाइप पैरामीटर हो गया क्या void ओके एंड फंक्शन का नाम हो गया शो वैल्यू देन पैरामीटर हो गया टी वैल्यू क्लियर पब्लिक
then type parameter t, then show value, then it is a parameter. Okay, got it? Oh, public type parameter t object, show value is a function, then parameter. parameter में capital T हो गया data type, val हो गया variable. Clear? अंकिता? Yes, sir. रिटर्न टाइप टी, फंक्शन का नाम हो गया शो वैल्यू, और पैरामीटर कैपिटल टी हो गया डाटा टाइप, सपोज वैल हो गया वेरिएबल का नाम. ओके, तो यहां पर एग्जांपल देखो. पब्लिक क्लास जेनरिक मेथड डेमो, ये हो गया आपका क्लास का नाम, पब्लिक क्लास जेनरिक मेथड डेमो. पब्लिक एम डिस्प्ले, देन पैरामीटर इज एम वैल्यू, देन इट इज रिटर्न द वैल्यू. तो मैंने यहां पर क्या किया ना, जेनरिक मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जेनरिक मेथड डेमो इक्वल्स टू न्यू जेनरिक मेथड. देन व्हेन आई कॉल ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के मदद से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया. जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा, यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू मैंने पास किया, टेस्ट पास किया. समझ में आया? तो आई एम पासिंग ए स्ट्रिंग वैल्यू. तो टेस्ट जाकर कहां पर स्टोर होगा, यहां पर स्टोर होगा, एंड मुझे रिटर्न करके भी दिखाएगा रिटर्न वैल्यू. फिर वही ऑब्जेक्ट से हाँ, इट इज स्टोर इन द VAL and that VAL is returning you. Okay, the next value I am passing here what, object dot display 7.5. 7.5 is what, then now check public void display 7.5. here we are passing a float value, decimal value. जब हम डेसिमल वैल्यू पास कर रहे हैं, नाउ इट इज स्टोर हियर 7.5. मतलब एक ही फंक्शन है जो क्या कर रहा है, आपका स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, एंड इट इज टेकिंग ए डबल वैल्यू, इट इज टेकन ए बुलियन वैल्यू. क्या, मैं तो कुछ नहीं किया. वही तो है, मैंने कर्सर ही मूव नहीं किया कुछ. आप स्ट्रिंग वैल्यू देख रहे हो, स्ट्रिंग टेस्ट, इट इज ए स्ट्रिंग वैल्यू. टेस्ट इज ए स्ट्रिंग वैल्यू. 7.5 is a double value, true is a boolean value and 10 is a integer value. मतलब ये सारा चीज कहां पर स्टोर हुआ, डिस्प्ले फंक्शन में. लेकिन डिस्प्ले फंक्शन में हम कुछ दूसरा पैरामीटर दिए हैं क्या, int boolean. तो आई एम डिफाइनिंग ओनली एम, डाटा टाइप हो गया एम, वेरिएबल का नाम हो गया var. तो ये एम डाटा टाइप नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए टाइप पैरामीटर. सो आई डिफाइन एम हियर. ओके, okay, understand this one or any doubt? ये समझ में आया तो? अंकिता Again, sir. बुझेला तो? Yes, sir. बुझेला. So in the next class, I will go for the second part of this generic. Okay, and next move to the another chapter. Okay, bye. Thank you, sir.